Hello everyone, in this video we're gonna do a hands-on experiment with HTTP module. हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक RESTful APIs बनाएंगे using the HTTP module of Node.js and we'll see that कि अगर मैं रॉ तरीके से बिल्कुल बिना किसी फ्रेमवर्क को यूज किए हुए अगर REST APIs बनाने की कोशिश करता हूँ Node.js में, एक तो बनाते कैसे हैं, कितना चैलेंजिंग हो सकता है वो, और क्यों ये मुझे मोटिवेट करता है टू लर्न अ फ्रेमवर्क लाइक एक्सप्रेस. So to master Node.js HTTP module more, if you have to, please keep watching this video till the end. साथ में लैपटॉप खोल लो, कोड करो मेरे साथ and make sure that you're writing each and every code. Let's get started. Perfect. So now you could see me on this blackboard. मेरे पास एक problem statement है. What is the problem statement? I'm trying to build a minimal student management API. ठीक है ना, using the nodes raw HTTP module. Now beautiful part here is that कि यहाँ पे मैं कोई fancy framework like Express नहीं use करने वाला हूँ. I'm going to make use of HTTP module. अब दोस्तों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इस तरीके से कोड लिखना सीख लोगे तो आपको पता होगा अंडर द हुड इंटरनली चीजें कैसे काम होती है. एक्सप्रेस भी अगर आप यूज कर रहे हो तो इंटरनली एक्सप्रेस भी HTTP मॉड्यूल ही यूज करता है. तो इफ यू डू दिस देन यू विल नो थिंग्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से खुल जाएंगे एंड इट विल आल्सो मोटिवेट यू टू लर्न एक्सप्रेस बेटर. ठीक है, तो लेट्स चालू करते हैं. फीचर्स हम क्या बिल्ड करने वाले हैं, हम यहाँ पे चार एपीआईज बनाने की कोशिश करेंगे. पहला स्टूडेंट्स एंड पॉइंट विच गेट मी लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. दूसरा पोस्ट सो दैट आई विल बी एबल टू क्रिएट अ स्टूडेंट. तीसरा आई नीड टू गो एंड फेच द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट आईडी. 5 पैरा में यहाँ पे डाला हुआ है. और चौथा, इफ आई गो एंड कॉल एनी अदर एंड पॉइंट, any other HTTP word, then I should go and get 404 for the unknown routes response. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है. इसको हम बिल्ड करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विथ आवर कोड. सो मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप, है ना. अब अगर मैं चाहता हूँ दोस्त कि इसके अंदर मैं node.js का प्रोजेक्ट बना पाऊँ तो आई हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द नोड प्रोजेक्ट. फॉर दैट आई विल गो एंड डू npm init which we have already done it. जैसे मैंने ये करा it will ask me the package name. Let me remove this. I have to be inside the student management first of all, so I'll go and student management app. अब मैं करूँगा npm init and package name is student management app. Yes, I'll keep it as it is. Version is this. Description demo app using HTTP module for API development. Perfect. Entry point is index.js, and complete. जैसे मैं इसको कंप्लीट करा, स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप के अंदर में एक पैकेज आ गया package.json. ठीक है, अब मुझे क्या करना है सर, मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप बनाना है और इस स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप में जो मेरा रिसोर्स है, सेंट्रल रिसोर्स जो है मेरा, अगर मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं, जो मेरा ऐप है, मेरे को क्या बनाना है, मेरे को एपीआई बनानी है, REST APIs for the resource which is student. देखो रेस्ट की दुनिया में मैंने आपको ऑलरेडी बताया रेस्ट वाले क्लास में. अगर आपने वो मिस किया प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेस्ट एपीआई अगर आपको बनानी होगी तो उसके कोर और सेंटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रिसोर्स या फिर डेटा, एंड दैट इज स्टूडेंट हियर इटसेल्फ. और इस स्टूडेंट के ऊपर ही मैं गेट एपीआई बनाना चाहता हूं और मैं पोस्ट एपीआई बनाना चाहता हूं. दीज आर माय टू टास्क दैट आई वांट टू अचीव. Before I go and start working on the get and the post APIs, let's talk about the student resource itself. तो student resource को represent करने के लिए यहाँ पे मैं database use नहीं कर रहा हूँ, तो I'll make use of the file system itself. So let me go and create a new file inside this. Let me go and call it as new file, and let me go and call it as students.js. students.js. ठीक है, so minimize कर देता हूँ. अब student.js के अंदर मुझे स्टूडेंट्स बनाना है. नाउ आई नीड टू हैव अ इनिशियल सेट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ const students is equals to and let me write the array of the student objects. पहला स्टूडेंट की आईडी मैंने खुद से बना दी. id is equals to 1 and name is विश्वा. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया. id is equals to 2 and name is Mohan.
ये मान लीजिए मैं इनिशियल सेट ऑफ स्टूडेंट्स में बना के चलता हूँ। अब इस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं यूज कर पाऊँ या अपडेट कर पाऊँ, to do that I will use something called as module.exports equals to students। अब जैसे मैंने module.exports करा, अपनी मॉड्यूल वाला सेक्शन देख रहे हैं, this make this student.js फाइल को इसने अभी जैसे मैंने यूज करा, now this file is will act like a module, this file will act like a module boss। ठीक है, ये मॉड्यूल बन गया। ओके ऑसम। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो एंड डिफाइन अनदर फाइल कॉल एज server.js। लेट मी गो एंड डिफाइन अनदर फाइल कॉल एज server.js। तो इसके अंदर में मैंने एक और फाइल बना दिया, लिख दिया server.js। ठीक है, मुझे पता है मुझे एंड पॉइंट्स क्या क्या बनाने हैं दोस्त। मुझे एंड पॉइंट्स बनाने हैं एक get/students। ठीक है, तो एक ये एंड पॉइंट बनाना है, फिर ये वाला बनाना है और फिर ये वाला बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, जहाँ पे आई एम एबल टू गेट अ स्टूडेंट्स, गेट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ विल बी गोइंग, इफ आई हैव टू डू ऑल दीस थिंग्स आई हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद द http। तो मैं शुरू से शुरू लिखना चालू करता हूँ। व्हाट आई विल डू हियर इज आई लेट const http इक्वल्स टू require http। ठीक है ना, एच से भी ले लिया मैंने फिर क्या करा, लेट्स const okay, and let's say that const students is equals to require, and let me go and find the students भी मैंने उठा लिया यहाँ से। ठीक है, और फिर मैंने मान लिया मेरा जो पोर्ट है is equals to मान लो 5000 पे चल रहा है, right, so I go and store the port as 5000। ठीक है, then I go and say that const server equals to http dot create server, और create server के अंदर में I have to go and pass a callback function which takes the request response, और अगर request response आएगा तो क्या एक्शन होगा वो लॉजिक यहाँ पे लिखना होगा, लॉजिक वेलकम, perfect। and what I need to do is that I have to go and start the server, right, I have to start the server। तो starting the server का कोड मैं पहले नीचे लिख देता हूँ, server dot listen, and I want to say that port, and I want to say the console.log, and I want to say that server got started on the port, and then I want to say this POT। ठीक, एक बार रन करके देखते हैं just to see if the server got get started। node server.js, कुछ इशू आ रहा है, what is that, already 5000 already in use है, 5050 यूज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, let's try to run this, and server got started at the port number 5050। now जो एरर अभी पहले आया था, what does it mean सर, एक बार में एक सर्वर पे, एक मशीन पे, एक लैपटॉप पे यू कैन ओनली रन वन सर्वर एट अ गिवन पोर्ट नंबर। एक बार अगर एक पोर्ट नंबर इन यूज है, नो अदर सर्विस कैन मेक यूज ऑफ दैट पोर्ट नंबर, तो दैट्स व्हाई आई हैव चेंज द पोर्ट नंबर राइट नाउ। परफेक्ट, ये मैंने लिख लिया, सर्वर इज नाउ अप एंड रनिंग। अब मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना है टू गो एंड फेच द गेट रिजल्ट्स, टू फेच द गेट रिजल्ट्स इटसेल्फ, राइट। तो मैं अब क्या करूँ सर यहाँ पे, व्हाट शुड आई गो एंड डू, राइट। मैं क्या चाहता हूँ कि इस 3 URLs आने वाले हैं आपके पास। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वो क्लीन करके दिखाऊं तो अपने पास एक URL है ये, which will be actually looking like this 127.0.0.15050/students। ये URL कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। दूसरा जो पोस्ट है वो ये गेट वाला है, ये दूसरा वाला दिखाई देगा कुछ पोस्ट होगा, अगेन 127.0.0.15050/students, और मुझे स्टूडेंट्स का डेटा डालना पड़ेगा, एंड आई हैव टू गो एंड रीड इट एंड ऐड इन माय रिजल्ट्स। और इस वाले केस में दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, गेट 127.0.0.1
5050 स्टूडेंट्स, और मैं जो भी आईडी ले लूंगा 123 फॉर एग्जाम्पल, वो 123 को सर्च करके निकाल के लेके आएगा इफ इट इज प्रेजेंट. नाउ there are different types of URLs here, right? There are different types of URLs here. एक ये URL, एक URL है, एक दूसरा URL. Node.js में एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं URL. ये जो इनबिल्ट मॉड्यूल है, इट इज एक्सपर्ट इन पार्सिंग. और जब पार्सिंग करता हूं उसका मतलब होता है इन अंडरस्टैंडिंग यूआरएल्स का इंफॉर्मेशन. तो चूंकि मुझे यहाँ पे यूआरएल्स में जाके आईडी को रीड करना होगा, मुझे समझना पड़ेगा, तो मैं यूआरएल मॉड्यूल को भी यूज कर लेता हूँ, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गो टू माय कोड एंड हियर आई विल गो एंड से दैट const equals to require, and I'll go and pass URL. ठीक है, ये हमने URL को उठा लिया. अब क्या करते हैं, अब we'll have to write the logic will come here. So first of all we'll write the logic or route for the get all request, right? So first of all मैं क्या करता हूँ, before even I start writing the logic for it, let me go say const parsed URL. मैं लिखूंगा URL dot parts कर देते हैं, and I go and say the request dot URL comma true. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब ये रिक्वेस्ट URL डॉट पार्ट्स मेथड का ये पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिखा रहा है. URL डॉट पार्ट्स takes a URL string, parses it and returns a URL object. ठीक है. The type error is thrown if your string is not a string. URL parse uses a lenient non-standard algorithm of parsing the URL string. It is prone to security issues such as the host comes spoofing. Right? इतना ज़्यादा secure नहीं है. ठीक है ना. If true, the query property will always be set to an object returned by the query string module parse method. If false, the query properties on the return URL object will be an unparsed, undecoded string. Right? तो जब ये true कर देते हो, तो URL में अगर कोई query parameter है, that also is converted into the objects. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको by default true करके रखा हुआ है. Then I have to go and find the path. So let me go into the const path. I go and call it as parsed URL dot path name. ठीक है. एंड देन कॉन्स्ट मेथड, तो मैं पास यूआरएल से ही मुझे रिक्वेस्ट डॉट मेथड. ठीक है. अब मैं आता हूँ, लेट मी गो एंड से दैट इफ path is equals to students. ठीक है. एंड method is equals to get. In that case, what we do is that we go and get all the, first of all I go and set the header, so I go and set right head, and I go and pass 200, and then I go and pass content type. ठीक है. And I go and say this application JSON. Path equals students, method equal to get. I write response dot write head 200 to her content time application JSON, right? And then I go and say the response dot end, and I go and say that JSON dot stringify, and then I will pass students. ठीक है. स्टूडेंट्स कहाँ से है, जो मैंने यहाँ से उठाया. This is how I go and get the students. ठीक है. So this is what happens in the case if I go and get this, right? And let me go and put it here. Perfectly fine. अब चलिए इसको रन करके देखते हैं if I am able to get all the results. So if I
Let me go and restart the server. Server got started. Let me go and open my postman. और यहाँ पे मैं अब change करके I can simply go and say that students, and it is a get list. Right? So if I go and do this, click on the send, I say that I am getting no. This is port number is different. It should be 5050. Click on the send, and I see that answer is 200. Okay, and I have got two records, ID Vishwa and ID Mohan. अब तो ये हो गया get all. What if I wanted to get a student with the ID equals to 1? At this time, if I go and click on the send, I don't get anything because there is no route defined for it. So it is just hanging out there. But I want to go and define this for the selective get, right? For a selective get. So I go and say that else if, and I go and say that path dot starts with, and I go and say that students slash else if path dot starts with this and method get. In that case, what we do, right? In that case, what we do is that we go and try to get the ID const ID, and what I do is that I go and say that path dot split, and split on the basis of slash, right? What this will do, this will get me an array. I need the second element into this. See how it will look like. The whole thing will look something like this. Slash students slash, let's say that it is 1. This is how I've called it. Now when I go and do this path dot split by slash, it will create an array, which is this, which is an empty string, followed by students, followed by 1. Now the 1 is at what index? 0, 1 and 2. So if I have to find this, I'll have to go and do the second index. Fair? Path dot split second index, and this whole thing I want to convert that into the integer. So I go and say that parse int, and I go and bring all of this inside this bracket. I got the ID. Okay, and then I go and say that const student is equals to students dot find, and inside this let me write a s dot id. So I'll get the student, and whatever the student that I have got, if it is present, then I go and say if student. In that case, I go into the response dot. Again, I'll go and set this header. Let me go and copy this. Perfect. And then I go and set that response dot end, and then I go and say that JSON dot stringify, and inside this I go and pass the student. Okay. else मैं क्या लिखूंगा? I go and say the response dot write head, and I go and say that 404, which is the status code, and I go and say the response dot end student not found. Correct. Let's try to see if this works. So if I go and run this node server.js and open my postman again, if I go and click on the send now, I got this Vishwa Mohan. If I remove this one, it will student not found. If I remove this will get me all the list of the students, right? If I go and find pice 5, there's no student with the ID 5, so I get student not found. If I go and pass 2, I'll go and get a student with the ID equals to 2. You see how great my get APIs are working. So far we have done the half of our work. I have got the get all APIs done, and I have also got the get with the ID wala thing done. Now let's try to think that I want to go and create a new record. I want to go and record a new record. So let's say that I want to go and create a new record. I want to create a new student, and in that I'll have to go and pass the body, right? So
So let me go and write the body here as, and I need to go and provide the name. Let's say the name is Shivani. Right now, if I go and click on this, nothing will happen because I've not defined anything as such. Ideally, this is not a good thing, right? So first of all, let's try to handle this. So in the case, if we go and call some API which is not well defined, I should go and put inside the else portion. And inside the else portion, we should go and write response dot write head, and we can call it as 404. And I go and say the response dot end, and I go and say that route not found. Right. So I go and save this and restart this server again and open my Postman and click on this. It will say that route not found. So this is still giving me some sense, but I have to go and define this. Now to define this, मुझे post बनाना पड़ेगा route, body भी देना पड़ेगा और इस body को मुझे read भी करना पड़ेगा. Let's go back to my code and let's try to start writing the code for it. So now if I go and see that, here I go and say that else if like this, right? And inside this else if I go and write if path is equals to slash students, ये तो मैच करेगा ही करेगा, ठीक है, and method is equals to post, ठीक है दोस्त. अगर ये ऐसा है so I have to first read the body, so I'll say that let body is empty, yeah, and then I'll have to do I'll have to listen to the event call as data. So I go and say request dot on, and then that event is data. I'll read it chunk by chunk, so I go to chunk, and I'll go and say that body plus equals to chunk dot to string. ठीक, chunk को मैंने string में convert कर दिया. Now this is how it is. I have read this, and then request dot on end, request on, and then I go and say that end. I again do a callback function. ठीक, और इस callback function में I go and say that const new student is equals to, and I go and say that JSON dot parse, and then I go and parse body. Perfectly fine. And then I go and say that new student dot id मुझे सेट करनी होगी, वो मैं एक अभी का जो डेट टाइम है उसके बेसिस पे कर देता हूँ ताकि it is always new and different and it's unique, right? And then I go and say that students dot push, and then I go new student. Perfect, push कर दिया मैंने. और पुश करने के बाद I go and set the headers. So I'll just go and copy this. And then I have to return response dot end, and in this I go and return JSON dot stringify, and then I go and pass new student. Perfectly fine. Cool. That is how it should look like. Let me go and restart the server. Control C and click on it. And now if I go and open my Postman, so अगर इस वक्त मैं अभी पहले get करके आपको दिखा दूं, I go and click on the get, I will get. Go and click on the get, I will get these student 1 and student. There are only 2, right? If I do multiple times, it's a little bit 2. Let me go and change that post, and I have a new record for Shivani. If I click on the send, right, I have created a new Shivani, and now if I go and do the get, I'll get 3 students, right? Can you see here? ID1, ID2, and ID3, which is this one. So I'm able to go and create a new records. One thing that I have to do is that when I go and do a post, when you create the status code that should go and return is 201, which indicates that it has been created. So with this, I have been able to go and create this API. I can go and fetch the list of all the students like this.
I can go and get the fetch student, any one students like this. If I want to go and create a new student, I go and say post, right? And then I go and let's say that I go and call as, let me take the name of the student as Vishnu. If I go and run this will be the ID, this one, right? And now if I do a get, there will be one more student record. There will be 4 total students records. So I'm going to do a get. You can see here this is Vishwa, Mohan, Shivani, Vishnu. There are 4 records, right? So with this, we have been able to go and create a very simple RESTful API. It is very possible to do it by just using the raw or the core Node.js module like HTTPS. No external dependencies, no framework like Express. But if you do it, this requires a lot of code, a lot of repetition of code, very verbose. And when you have to build an enterprise level application, a big one, a scalable one, that's where the difficulties will come in. तो इसके लिए now you have understood कि कितना थोड़ा कठिन है, थोड़ा वर्बोज है और आपको एक्सप्रेस जानना काफी इंपॉर्टेंट है. तो अगले वीडियो में we'll go and talk about the express and we'll move on to the next topic.